Hello my dear kids, welcome back to Technology series by Amit Publishing House. Children, this is a book, Joyfull Mathematics, and we are doing class 3 maths. So here let's start chapter number 6, and this is division. So let's start it. Stella used all the question buckets to paint the answer rainbow. So Stella is a girl and she used all these question buckets. You can see on all the buckets there are a few questions written. हर bucket पे कुछ question लिखा हुआ है. So she used this question bucket to fill in the rainbow. Color the question bucket and match the color of the answer rainbow. We have to color the question bucket and we have to match the answer rainbow. So here it's 9 here. So 9 is here. So we have to color it. And similarly, you have to solve the given questions. Next is write the division question using the given information. So we have to use information and write down the given division questions. So here this is dividend, divisor, quotient, and here is the question. So dividend divided by divisor is equal to quotient. So similarly, let's do the last one. 91 is a dividend. So dividend divided by the divisor and here is the quotient. I hope this is clear. Similarly, you have to do the rest. Now, you can see there are so many flowers in front of you. आपके सामने बहुत सारे flowers हैं. There are total 12 flowers here. There are 12 flowers. Now, there are 3 number of baskets. You can see 1 basket, 2 basket and 3 basket. Number of flower in each basket. हर basket में आपको equal amount of flowers रखने हैं. So what we are going to do? We are going to divide this 12 by 3. 12 flowers have been shed equally in 3 baskets to get 4 flowers in each basket. तो जब हमने 12 flowers को 3 basket में divide किया, we get 4 as the answer. When we share equally or distribute equally, we call it division. जब हम किसी चीज़ को equally share करते हैं या distribute करते हैं, उसे ही हम division कहते हैं. Division is actually repeated subtraction. Division क्या है? Subtraction को बार बार repeat करना. So here 12 minus 3, जब हमने 12 में से 3 को subtract कर दिया, answer is 9. Now 9 में से 3 को subtract किया, we get 6. 6 में से 3 को subtract किया, we get 3 and 3 minus 3 is 0. तो 3 को हमने कितनी बार subtract किया? 1, 2, 3 and 4. तो 4 times हमने 3 को subtract किया. So we can write it 12 divided by 3 is 4. So here dividend is divided by the divisor and we get the quotient. The number to be divided is called the dividend. जिस number को हम divide करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? Dividend कहते हैं. The number by which we divide is called the divisor. जिस number से divide करना है उसे हम divisor कहते हैं. The answer we get after division is called quotient. और जो answer हमें मिलता है उसे हम quotient कहते हैं. We have 2 division facts for each multiplication fact. So हर एक multiplication fact के लिए हमारे पास 2 division facts होते हैं. What are the multiplication facts? So here you can see 7 multiply 4 is equal to 28. So for this we have 2 division facts. 28 को अगर हम 7 से divide करें we will get 4 as the answer, और अगर 28 को हम 4 से divide करें we will get 7 as the answer. So here you can see these are the 2 division facts. Now a multiplication fact with identical factors gives only 1 division fact. So जो ये multiplication facts हैं ये क्या करते हैं? एक ही division facts देते हैं. For example, दोनों same हैं, identical हैं. Identical factor होंगे तो एक ही division fact निकलेगा. So 6 multiply 6 is 36. तो हम 36 को 6 से divide करेंगे, we will get 6 as answer. और अगर हम इसे interchange करेंगे, then also we will get the same division fact that we are seeing here. So identical factors में क्या होता है? Division fact same होता है.
एक ही होता है. Now let's do this exercise 6.1. Here are 24 balls. So there are 24 balls. Put an equal number of balls in each box. So you can see there are 1, 2, 3, 4, 5 and 6 boxes. तो हम क्या करेंगे, 24 balls को हम 6 से divide कर देंगे. So we will get the answer as 4. So we will keep 4 balls in each of these boxes. So let's do it. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 and 1, 2, 3, 4. Now 4 and 4. So we can see 1, 2, 3, 4, 5, 6. Total there are 6 groups. So we have divided these 24 balls in 6 groups. So we get 4 as the answer. So here there will be dash ball in each box. एक box में कितने ball होंगे? 4 balls. So 4 will be written here. Now question number 2 says make equal sets, then complete the division fact. हमें equal set बनाने हैं और division fact को complete करने हैं. So 18 divided by 6 is 3. So let's make one set, 2, 3, 4, 5 and 6. So we have made 6 sets of these 18 mangoes. So there are total 3 mangoes in each set. Similarly, children, you have to do the rest questions. Now question number 3 says how many times can you take away? कितनी बार आप ले सकते हैं? Let's see. 12 minus 6 is 6. Now 6 minus 6 is 0. So here कितनी बार हमने 6 को subtract किया? 2 times. So let's subtract 27 में से 9 को. What we will get? 18. Next 18 minus 9 we will get 9. 9 minus 9 we will get 0. So how many times we will subtract it? 1, 2, 3. So right here 3. So similarly, children, you have to do the rest questions. Here you can see you have written 12 and how many times? 2 times. Here 3 times. So here you have to write it like this. I hope this is clear to you. Now relation between multiplication and division. क्या relation है इन दोनों के बीच में? So you can see there are 12 flowers. Now 4 group of 3 each. 4 group है 3 each के. Or we can say 4 multiply 3 is 12. Again 3 group है 4 each के. 3 group बनाए हमने 4 के. So we can write 3 multiply 4 is 12. Now these are the multiplication facts for this division. So for this division, these are the multiplication facts. Now the corresponding division facts are 12 divided by 3 is 4 and 12 divided by 4 is 3. Now here you can see similarly 3 multiply 6 is 18. अब division fact लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे? 18 divided by 6 is 3 and 18 divided by 3 is 6. Again इसका भी हम क्या करेंगे? division fact निकालेंगे. 4 multiply 5 is 20. Now 20 divided by 4 is 5 and 20 divided by 5 is 4. Thus the multiplication fact given rise to 2 different division facts except when multiplication is of the same number. जब same number को multiply करते हैं तब एक ही division fact होता है, नहीं तो 2 division facts होते ही हैं. We can find an answer to a division problem by using multiplication table. हम किसी भी डिविजन प्रॉब्लम का आंसर ढूंढ सकते हैं. कैसे? मल्टीप्लिकेशन को के जो टेबल्स हैं उसे यूज करके. फॉर एग्जांपल 36 डिवाइडेड बाय 9. सो लेट्स सी इन द टेबल ऑफ 9. 9 की टेबल में हम 36 को देखते हैं. सो 9 1 is 9, 9 2 is 18, 9 3 is 27, 9 4 is 36. So 4 times it's 36. So 36 divided by 9 is 4.
मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन आर इनवर्स ऑपरेशंस, मींस दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। जैसे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, वैसे मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन एक दूसरे के उल्टे हैं। वी सी दैट डिवीजन इज द ऑपोजिट ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ये जो डिवीजन है ये मल्टीप्लीकेशन का ऑपोजिट है। डिवीजन में चीजों को हम डिवाइड कर देते हैं तो कम हो जाती हैं, मल्टीप्लीकेशन में चीजें बढ़ जाती हैं। सो दिस इज अ मल्टीप्लीकेशन फैक्ट एंड दिस इज द डिवीजन फैक्ट। लेट्स सी। अब आपने लिखा 2 × 3 तो आंसर आ गया 6, मीन्स एक बड़ा नंबर है। लेकिन अगर आप 6 से 2 को डिवाइड करेंगे वी विल गेट 3 एज आंसर। सो ये नंबर जो है छोटा है। So this also gives us a fact that dividend is equal to divisor multiply question. डिविजन का मतलब होता है डिविडेंड जो है अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हो, डिवाइजर को क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करके। Now let's do this exercise 6.2. Write two division facts for the each of the multiplication facts. तो हमें 2 डिविजन फैक्ट्स लिखने हैं। One is done for you. Here 72 9 8 times is 72. So 72 को हमने 8 से डिवाइड किया, 9 is the answer. 72 को 9 से डिवाइड किया, 8 is the answer. Let's do this B part. 14 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, we will get 7 as the answer. And similarly 14 divided by 7 will be 2. So like this you have to do the rest questions. Now next is fill in the blanks. 28 divided by 7 is 4. So 28 divided by 7 is 4. Now similarly you can you have to find out what number will come here. What will be the dividend? For what? For that what we will do? We will multiply these two. So it will be 40. Clear? So like this you have to do the rest of the questions, children. Now what are the properties of division? Dividing the number by 1 gives the number itself. So अगर हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं we get that same number as the answer. Next is dividing a number by itself gives 1 as a question. अगर हमने किसी भी नंबर को खुद से डिवाइड किया, मीन्स अगर 2 को 2 से ही डिवाइड कर रहे हैं, 4 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं, we get 1 as a question. 1 मिलेगा हमें as a answer. For example, if we divide 6 flowers among 6 vases, हमारे पास 6 flowers है, उसे हमें 6 vase में रखना है. How many flowers can we put in each vase? So हम क्या करेंगे, हर vase में 1 flower रखेंगे. Similarly, dividing 0 by a number gives 0 as a question. 0 एक नंबर है, अगर हम उससे डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर को we will get 0 as the answer. So here the question is 0. 0 divided by 5 is 0. Now children, let's do this exercise 6.3. Here you can see there's question, fill in the blanks. 7 divided by 1 is 7 only. 0 divided by 10 is 0. 2 divided by 2 is 1. I hope this is clear. Now let's learn division, long division. I have 42 balls. मेरे पास 42 balls हैं. I want to put them equally in 7 boxes. तो इन 7 boxes में मुझे उन 42 balls को रखना है. How many balls do I put in each box? कितने ball को रखूँ एक box में? Let me teach you a simpler method, long division. So एक long division method है, उससे हम इसे solve करेंगे. Here you can see we have to divide 42 by 7. 42 balls से 7 boxes में रखने, तो let's divide it. So remember the multiplication table of 7. 7 के multiplication table को हमें learn करना है. तो आपने क्या देखा, 42 comes at 6th place in the multiplication table. जब हमने 7 की table 6 time पढ़ी, we get 42 as the answer. So in the long division we write it as, जब हम long division में से लिखते हैं तो हम लिखते हैं 42 is the dividend, 7 is the divisor. अब हम जब 7 6 is 42, so यहाँ पे 6 है हमारा question, which is our answer. Hence 6 ball can be put in each box. एक box में हम 6 balls को रख सकते हैं. Division by regrouping 2-digit number. अब 2-digit numbers की बात हो रही है, उन्हें कैसे divide करते हैं? So let's see the example. We have to divide 92 by 4. 92 को 4 से divide करना है. So what to do? First we have to arrange the number in column. Column में हमें arrange करना है. Next, divide 9 tens by 4. 9 को हमें 4 से divide करना है.
सो जब भी हम डिवीजन को हम स्टार्ट करते हैं पहले हम फर्स्ट डिजिट को देखते हैं। तो पहला डिजिट है 9। अब 9 क्या 4 की टेबल में आता है? नो। तो हम क्या करेंगे 9 से एक छोटा नंबर जो 4 की टेबल में आता है उसे लेंगे। सो 4 2 टाइम्स इज 8। तो अब हम क्या करेंगे 9 और 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी विल गेट 1। अब नेक्स्ट नंबर को हम यहाँ पे कॉपी करेंगे क्योंकि 1 इज नॉट डिविजिबल बाई 4, 4 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो 2 आ गया उसकी हेल्प के लिए, सो इट बिकम्स 12 है, 12 बन गया ये। नाउ लेट्स सी 4 की टेबल में क्या 12 आता है? यस, 3 टाइम्स इट्स 12। सो 4 3 टाइम्स इज 12 वी हैव रिटन हियर। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, वी गेट 0 एज आंसर। सो हियर 23 इज the answer, which you can also say it's the question. Now children, let's do this exercise 6.4. Here we have to divide the following in your notebook. You have to do it this. First question is we have to divide 46 by 2. So 2 की टेबल में पहले हम 4 देखेंगे, आता है? Yes, 2 टाइम्स आता है, तो 2 टाइम्स इज 4। सब्ट्रैक्ट किया, 0 आंसर आया। अब ये 6 नीचे आएगा। Now 2 3 टाइम्स इज 6, सब्ट्रैक्ट किया, 0 आ गया। सो द आंसर इज 23। सिमिलरली लेट्स डू दिस क्वेश्चन। सो 63 को डिवाइड करेंगे हम 3 से। सो 3 2 टाइम्स है 6, वी गेट 0। नाउ 3 1 टाइम्स इज 3, वी गेट 0। सो हियर द आंसर इज 21. So similarly children, you have to do the rest of the questions that are given here in your notebook. Next question is divide the following. Here we have to divide the given numbers. 72 divided by 4 is the first question here. Let's divide it. 4 की टेबल में 7 आता है? No, क्योंकि 4 2 टाइम्स 8 आता है। तो अब 7 से स्मॉलर नंबर क्या आता है? 1 टाइम्स 4। So let's subtract both of these. 7 में से हमने 4 को कट किया, we get 3 as answer. अब 3 4 से स्मॉलर है इसलिए वो डिवाइड नहीं हो सकता फर्दर। अब हम क्या करेंगे 2 को यहाँ पे 3 की हेल्प के लिए भेज देंगे। अब 4 की टेबल में हमें 32 को चेक करना है। सो 4 की टेबल में हमने 32 को चेक किया तो वी गेट 8 टाइम्स 32। नाउ सब्ट्रैक्ट किया, वी गेट 0. So here the answer is 18. Clear children? So like this you have to complete the rest of the questions that are given here. Now division of a 3-digit number by a 1-digit number. 3-digit number को कैसे हम 1-digit number से divide कर सकते हैं? So here we have to divide 684 by 2. 684 को हमें 2 से divide करना है. So here let's arrange these in columns. अब 2 की टेबल में हम 6 देखेंगे। यस, आता है 3 टाइम्स। 3 हमने क्वेश्चन में लिख दिया और 6 को डिवाइड किया तो आंसर आया 0। नेक्स्ट नंबर 8 आया। 8 आता है 2 की टेबल में? यस, 4 टाइम्स 8 आता है तो 8 को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। नेक्स्ट नंबर आया 4। सो यस 4 आता है? यस, 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स 4 वी हैव रिटन हियर। नाउ इट्स आल्सो सब्ट्रैक्टेड। सो हियर the answer is 342 is the question. नेक्स्ट इज डिविजन बाय रीग्रुपिंग 3-digit number. 3-digit numbers को कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं? रीग्रुप करके। हियर वी हैव टू डिवाइड 675 by 3. 675 को 3 से डिवाइड करना है। सो लेट्स डू इट। 3 की टेबल में 6 आता है? यस, 2 टाइम्स, तो हमने 2 टाइम्स लिख के यहाँ पर 6 को सब्ट्रैक्ट किया। नेक्स्ट इज 7, तो 3 की टेबल में 7 आता है? नो, बट 7 से एक छोटा नंबर आता है, वो है 6, तो 2 टाइम्स हम 6 लिख देंगे एंड लेट्स सब्ट्रैक्ट दें। तो चलिए हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, 1 आया आंसर। नेक्स्ट 5 विल कम हियर टू हेल्प 1. नाउ 3 की टेबल में हम 15 देखेंगे। यस, कितना टाइम आता है? 5 टाइम। सो 15 वी हैव रिटन एंड वी हैव सब्ट्रैक्टेड इट. सो हियर द आंसर इज 225. नाउ लेट्स डू दिस एक्सरसाइज 6.5. Here we have to divide the following by long division method in your notebook. So here the first question is 5 divided by 5. So 5 की टेबल में 5 देखेंगे, 1 टाइम्स आता है, चलो कर दिया। नेक्स्ट अब 5 नीचे आया, 1 टाइम्स फिर से 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 0 आ गया। अब नेक्स्ट ये वाला 5 आया, 1 टाइम्स 5 आया,
subtract कर दिया 0. So here the answer is 1 1 1. Clear? Now let's do another one. Let's do the second one. Second one क्या कह रहा है? 168 को divide करना है हमें 2 से. So let's divide it. 2, अब पहला नंबर है 1, तो 1 आता है 2 की टेबल में? नो. तो 1 6 16 को हम लेंगे एक साथ. ओके, सो 2 8 टाइम्स इज 16. सो इट्स 16. लेट्स सब्ट्रैक्ट. 0 आ गया. अब अगला नंबर क्या बचा? 8, तो 8 आ गया. 4 टाइम्स इज 8. 0. So here the answer is 84. Children, I hope this is clear. Okay. So you have to do the rest of the questions like this only. Next is divide the following. Let's divide these numbers. Here we have to divide 672 by 3. So 3 की टेबल में 6 देखेंगे. Yes, 2 times 6. चलिए सब्ट्रैक्ट कर दिया. अब 7 आया. 7 तो नहीं आता 3 की टेबल में. So 2 times we will take 6 here. 1 आया. Now 2 has come here. Let's check. क्या 12 आता है? Yes. 4 times 12. So चलिए इसको भी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. We get 0. So here the answer is 224. So like this, children, you have to do the rest of the questions. Division with remainder. So here there are 7 children in a park. एक पार्क है जिसमें कितने बच्चे हैं? 7. Let's divide them equally to make them sit in 2 benches. हम उन्हें चलिए equally divide करते हैं. 2 benches हैं, वहाँ पे उन्हें बैठने. So there are 3 children on each bench. हर bench पे आप देख सकते हो 3 children बैठ गए हैं. 1 child is left out. एक बच्चा यहाँ पे बच गया है. So in division, sometimes it's not possible to equally divide in groups or equally share all the things. तो कई बार ऐसा होता है कि हम चीज़ों को equally share नहीं कर पाते हैं, कुछ चीज़ें बच जाती हैं. So उन बची ही चीज़ों को हम क्या कहते हैं? Reminder. Clear? The number that is left over in division is called the remainder. वो जो नंबर बच गया उसे हम reminder कहते हैं. Now we can check our answer by the relationship. ये जो फॉर्मूला है इससे हम इजीली हम चेक कर सकते हैं our answer is correct or not. So dividend is equal to divisor multiply quotient. ये तो हमें पहले से पता था. अब हम क्या करेंगे? वो जो रिमाइंडर इसे इसमें प्लस कर देंगे. So this will be the total formula of finding out the dividend. Now children, let's do the example that is given here. We have to divide 38 by 3. 38 को हमें किससे डिवाइड करना है? 3 से डिवाइड करना है. सो चलिए पहले हमने इन्हें कॉलम में अरेंज कर दिया. अब 3 की टेबल में हम क्या रखेंगे? 3. 1 times 3 आता है. चलिए 0 बचा है यहाँ पे. नाउ 8 नीचे आ गया है. अब 3 की टेबल में हम 8 देखेंगे आता है? नो. तो हमने क्या किया? 2 times 6 लिख दिया. सो यहाँ पे अब जब हमने 8 और 6 को सब्ट्रैक्ट किया, वी गेट 2 एज अ रिमाइंडर. मीन्स 2 बच गए हैं. नाउ हाउ कैन वी चेक हमारा जो सोल्यूशन है ये सही है कि नहीं? What we have to do? We have to use this formula. Divide. So divisor is 3. Multiply by quotient is 12. And plus remainder is 2. So let's do this. On doing this, we get 38 as the answer. You can see here. On doing this, we get 38 as the answer. So this 38 is equal to this. So this answer is correct. Now children, let's do this exercise 6.6. Find a quotient and remainder in your notebook. Check your answers also. So what we have to do? We have to divide the given numbers and also check our answer. Let's do this second one. 4 से we have to divide 22. So अब 4 की टेबल में 2 तो नहीं देख पाएंगे because it is smaller, to 20 देखेंगे. So let's check. क्या 4 की टेबल में 22 आता है? No. So what we are going to write? 5 times 20. So यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 0. So what is the remainder? 2 is the remainder. अब now let's check this. Check कैसे करेंगे? So dividend
is equal to divisor multiply quotient plus remainder. 4 multiply 5 plus 2. 20 plus 2, which will be 22. So this is the number that we get. 22 we got. So that's why this division is correct. And we have also checked it. So children, like this you have to do the rest questions that are given here. Now children, let's learn division by 10. When a number is divided by 10, remove the digit at ones place. जब किसी भी नंबर को हम 10 से डिवाइड करते हैं, हमें क्या करना है? वी हैव टू रिमूव द डिजिट एट वंस प्लेस. वंस प्लेस के डिजिट को हमें रिमूव कर देनी है. द डिजिट्स विल बी रिमाइंडर एंड द रिमेनिंग डिजिट्स विल बिकम द क्वेश्चन. जो डिजिट है वो रिमाइंडर बन जाएगा, बाकी बचे हुए डिजिट्स क्वेश्चन बन जाएंगे. सो हियर लेट्स डिवाइड 60 by 10. 60 को हमने 10 से डिवाइड किया. सो 60 में आप देख सकते हो 0 इज द रिमाइंडर एंड 6 इज द क्वेश्चन. सिमिलरली 95 को हमने 10 से डिवाइड किया, तो हम इसको चेक कर सकते हैं. 9 इज द क्वेश्चन एंड 5 इज द रिमाइंडर. So this is the shortest method of doing division by 10. Now children, let's do this exercise 6.7. So we have to divide 70 by 10. What will be the quotient? So here 7 is a quotient and 0 will be the remainder. Next 85 by 10, 8 will be the quotient and 5 will be the remainder. Similarly 42 में 4 will be the quotient and 2 will be the remainder. Next 5 to 8. 6 to 8 divided by 10. So 62 will be the quotient and 8 will be the remainder. So children, like this you have to complete the rest of the questions that are given here. Now let's come to word problems. 4 students can sit on a desk. एक desk पे 4 बच्चे बैठ सकते हैं. How many desks are needed for 64 children? 64 children को एक क्लास में बैठाना है, तो हमें कितने desks चाहिए? So we have the total number of students as 64. Number of children that can sit in one desk is 4. तो हम 64 से 4 को divide कर देंगे and division we get 16 as the answer. Next question is, there are 364 plants in 7 rows in a garden. So इतने plants हैं 7 rows में. How many plants are there in each row? एक रो में कितने हैं? So for this, जब एक की बात करें, जब आपको एक का बताना हो, तो हमें क्या करना? We have to divide. So 364 को हमने 7 से divide किया and we get 52 as the answer. So now children, let's do this exercise 6.8. A cinema hall has 216 seats which are equally divided in 9 rows. तो इतने सीट्स हैं सिनेमा हॉल में, उसे जो है 9 रो में डिवाइड किया गया है. हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन ईच रो? ईच का मतलब होता है 1 रो. तो 1 की बात है तो इट्स डिवाइड दीज नंबर्स. ओके, 9 के टेबल में 2 दिखेंगे? नो, इट विल नॉट बी डिविजिबल. नाउ 21 को चेक करेंगे 9 की टेबल में, तो क्या 9 के टेबल में 21 आता है? नो, नहीं आता है. So let's read the table of 9. 9 ones are 9, 9 twos are 18. So 18 will come here. Now let's subtract these numbers from these two numbers. So 11 minus 8 will be 3. And here it will be 0. Now अब 3 के हेल्प के लिए आएगा 6. अब 9 की टेबल में हम देखेंगे क्या 36 आता है? So yes, 9 की टेबल में आता है 36. कितने टाइम्स आता है? 4 टाइम्स. तो 4 टाइम्स 36. Let's subtract it. We will get 0 here. So here there are 24 seats in each row. 24 seats should be there in each row. I hope this is clear to you children. Now similarly you have to do the next question. Now let's do this question number 6. A laborer earns 1500 rupees in 4 days. तो एक लेबर है, उसने 4 days में इतने रुपए कमाए हैं. How much does he earn in a day? A day means 1 day. So again here we have to divide this 1500 by 4. तो चलिए let's divide it. So 4 की टेबल में देखते हैं
क्या 15 आता है? No. So which number will come? 3 times 12. Now let's subtract these. 3, 0. Okay. अब 3 की हेल्प के लिए 0 आ गया नीचे. तो let's see. क्या 4 की टेबल में 30 आता है? No. क्या आता है? 28. How many times? 7 times. So 4 7s is 28. Let's subtract. So we will get 2 as the answer. Now 2 की हेल्प के लिए वापस से जो लास्ट 0 है ये आ जाता है. क्या 4 की टेबल में 20 आता है? Yes. 5 times. Now let's subtract. We will get 0. So here the answer is 375 rupees. So the labor earns 375 rupees in one day. I hope this is clear, children. So like this, you have to complete the rest of the questions that are given here. And with this, we have completed the chapter. I hope that you have understood it. And I'll be meeting you soon with a new video. Till then, stay elated.